Guys, good evening. Let's wait one more minute um, and then we'll get started. All right, guys, so let's get started. Guys, my name is Neeraj Pathak, and I'm gonna give my views on what's gonna happen with the global फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट्स एक्चुअली मैं स्ट्रीम को हिंदी इंग्लिश दोनों में रखूंगा ताकि हमारी हिंदी ऑडियंस भी इसको इनका फ़ायदा ले पाए जो मैं व्यू पॉइंट्स देने वाला हूँ एंड आई एम गोना टॉक अबाउट कि मेरा क्या परसेप्शन है अबाउट द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक environment that we are in and what's going to happen by the end of 2022, the 1 month that we have remaining. एंड ऑल्सो मुझे क्या लगता है कि 2023 के बिगनिंग में ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स कहाँ पे होंगे एंड यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं. ठीक है, तो हम काफ़ी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एंड मैं एक एक करके काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों को आपके सामने रखूँगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से आंसर देने का जितना हो सके. ये मेरा पहला यूट्यूब लाइव है. मैं यूट्यूब पे काफ़ी नया हूँ बट सिंस मैं ये पहली बार कर रहा हूँ तो आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम टाइम अपना बैकग्राउंड बताने में. तो अगेन माय नेम इज़ नीरज पाठक एंड आई वर्क एट अ सीनियर लीडरशिप पोजीशन इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप कंसल्टिंग फर्म्स. ठीक है, मैं अमेरिका में था काफ़ी साल, 16 साल के ऊपर, और मुझे ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स का बहुत अच्छा एक्सपोजर है, स्पेशली यूएस फेडरल मार्केट जिसको हम लोग मदर ऑफ ऑल मार्केट्स बोलते हैं. और मैं काफ़ी सालों से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते आ रहा हूँ. by profession, I'm also working in financial markets. I'm in investment banking by trade, and I do mergers and acquisitions, M&A, for many years, right. तो इससे पहले मैं वॉल स्ट्रीट में काम करता था यूएस में. करीब 15-16 साल वहाँ पे काम किया है और काफ़ी अच्छा आइडिया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, वॉल स्ट्रीट का, कैपिटल मार्केट्स, हाउ डज द वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब कैसे एक दूसरे से टाइड हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, पॉलिटिक्स, द ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, हाउ ईच ऑफ दीज, ये सारे हमारे प्राइसेस को, स्टॉक्स को कैसे अफेक्ट करते हैं. मैं काफ़ी अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मुझे एक्सपीरियंस है कनेक्ट करने का. एंड ये सारे हमारे इक्विटी और कमोडिटीज़ को कैसे अफेक्ट करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस. मैं इस पे कुछ लाइट शेड करना चाहूँगा, स्पेशली जिस सिचुएशन में हम आज हैं और हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं और दिसंबर में हम कहाँ होंगे और इवन 2023 बिगनिंग एंड एंड. ठीक है, तो ठीक है गाइस, विद दैट इंट्रोडक्शन लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लाइव स्ट्रीम. तो अगेन आई नो काफ़ी मुझे क्वेश्चंस आते हैं विद माय फ्रेंड्स एंड माय कॉलीग्स, कि भाई बताओ यहाँ से तुम्हें क्या लगता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस हम कहाँ पे हेडेड हैं. तो गाइस, टुडे इज 28th of November. आज आप लोग सब न्यूज़ देख ही रहे होगे. देयर सम न्यूज़ अराउंड चाइना, जिन्होंने अगेन कोविड लॉकडाउन्स वगैरह पे काफ़ी अनरेस्ट है वहाँ पे. पीपल आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, कि भाई based on the new COVID lockdowns that the government has in China, and the US market जो अभी खुला हुआ है, we are in red, so that is having an effect on the overall trading environment as well. इंडिया भी आज रेड में ही बंद हुआ था एंड यूएस मार्केट अभी ऑलमोस्ट लंच टाइम वहाँ पे होने वाला है, क्लोज टू 12:16 PM ईस्टर्न टाइम हो रहा है वहाँ पे. एंड वी आर ऑलमोस्ट close to 1% down on the S&P 500. ठीक है,
So basically, guys, I mean, we are closely wrapping up November, and now we are heading into December. And आई डोंट नो आप लोग जितने भी लोग ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप लोग का कितना एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सांता क्लॉस रैली ठीक है। तो बेसिकली सांता क्लॉस रैली क्या होता है कि नवंबर और दिसंबर और टिपिकली सीजनली स्ट्रॉन्ग मंथ्स फॉर स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट्स, राइट। जैसे यूएस में क्या है कि अभी रिसेंटली वहाँ पे थैंक्स गिविंग हॉलीडेज हुआ, एंड थैंक्स गिविंग में काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं फ्रॉम थैंक्स गिविंग टू क्रिसमस एंड अंटिल द एंड ऑफ द ईयर। ये काफ़ी सीजनली स्ट्रॉन्ग मंथ्स होते हैं हिस्टोरिकली, अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो नवंबर दिसंबर टिपिकली स्ट्रॉन्ग मंथ्स, एंड टिपिकली देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सांता क्लॉस रैली। एसेंशियली जो लोग पहली बार सुन रहे हैं सांता क्लॉस रैली क्या है, वो essentially it is a period that starts from Thanksgiving and it goes all the way till the end of December. ठीक है, this period historically is seasonally strong, and typically we see an uptick in the market during this period, and that is what is called Santa Claus rally. Now again, for people who are actively trading and investing in the markets, और जिन लोगों को कुछ साल हो चुका है, वो लोग देखे होंगे 2021 was a pretty abnormal year, right? 2021 was a pretty abnormal year जिसमें कि हम कुछ भी खरीदते थे हर चीज़ ऊपर जाती थी, and the reason for that was because global central banks of the world, चाहे वो यूएस का फेड हो, चाहे यूरोप का ईसीबी हो, चाहे हमारा इंडिया का आरबीआई हो, देयर वाज इट वाज अ ग्लोबल लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, राइट। जब सारे सेंट्रल बैंक्स पैसा डालते हैं मार्केट्स में, उस टाइम पे टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मनी दैट इज इंजेक्टेड इनटू द कैपिटल मार्केट्स। इट इज देयर इज अ फ्रेज दैट इज कॉल्ड the tide that lifts all boats, right? So because it was a liquidity driven rally, and that is why 2021 में हम जो भी कुछ खरीदते थे, all you have to do is was to be long in the market and everything just went up. What changed in 2022 is we experienced severe bear markets where global markets, US markets, we crashed more than 20% from all time high, right? So that is typically any typically, again, because my audience might be varied, कुछ लोग बहुत fresh होंगे, कुछ लोगों का थोड़ा experience होगा, but just to give you guys a little picture, um, correction जिसको हम बोलते हैं, correction is typically when you are down 10% from all time high, that is called a correction, and anything that is more than 20% um, more from the all time high, that typically we say that we are in a bear market, ठीक है। So basically, 2022 में, because when the Fed started taking money out, जिन्होंने जो इतना liquidity उन्होंने pump किया था, when they started pulling that money out, that basically started the whole 2022 downward action, right? And ऊपर से, of course, with the whole Russia-Ukraine war that typically started around the February-March time frame, that was basically that basically put oil on the fire, right? Because that basically also induced a lot of global supply chain concern, where Russia being a key provider of oil and natural gas, that put a severe pressure on the commodities side, which of course led it to this bear market rally as well, right? And especially because everything was at a skyrocketing valuation at the end of 2021. So companies had to basically revise their guidelines and come to a more meaningful valuation where it makes more sense. And as Fed basically अभी जो इंटरेस्ट रेट्स की जो बातें चल रही हैं, फेड हैज ऑलरेडी डन rate hikes, almost 4 to 5 rate hikes in the last couple of months, and because of that, again, global markets have been going down. But yeah, I mean, 2022 January say, we have been in bear market, but of course the bear market rallies जो हम लोग बोलते हैं, they have also been very very sharp, which is pretty common in any typical bear market, be it the 2000 bear market, the dot-com burst, or the 2008 the great recession, the 2020 COVID crash, or the 2022 crash that we are witnessing, right, where global central banks in the world, they have all been raising
interest rates, rate hikes, and all of that, right? So basically, guys, so that is the stemming reason I know why we have been seeing this downward action in 2022, क्योंकि उतना पैसा जो आप 2021 में डाले थे, अगर वो पैसा बाहर आएगा, तो ऑब्वियसली जिसके कारण मार्केट ऊपर गया था, जब वो पैसा बाहर आएगा, तो ऑफ कोर्स दैट इज गोना पुल द एंटायर मार्केट डाउन विथ इट. All right, so that's on a very very simplistic and a very high level. But just to dig a little deeper, especially so, and again, like being in India and Indian markets or any financial markets, we follow U.S. markets very very closely because it's the mother of all markets. And U.S. में monthly data publish होता है. The two monthly data, especially which have जिस पे काफ़ी लोगों का टेंशन रहता है every month, that is CPI and PPI. CPI is Consumer Price Index. PPI stands for Producer Price Index. CPI is the price that consumers pay to make goods and services. Producers, PPI is what people like you and I pay the producers to buy those finished goods and services and from those consumers, right? And why these numbers have significantly been important in last so many months, especially in 2022, is because they are a very accurate gauge for inflation. एंड हमारे इन्फ्लेशन प्राइसेस क्या होने वाले हैं, उस पे सीपीआई और पीपीआई का काफ़ी इफेक्ट होता है. ठीक है, तो so basically, last few readings, like especially September, October, November, CPI, PPI have been in focus. Readings have been in focus. And especially for any meaningful drop in inflation, जो Federal Reserve, जो वहाँ की central bank है, they want to see two consecutive downward moves in CPI and PPI. Now, as I said earlier, कि CPI PPI हर महीने रिलीज होती है. तो जो सितंबर 13th का CPI रीडिंग था, वो काफ़ी हाई था compared to what the expectations was. And similar thing was October. The first CPI and PPI reading that came low as per the expectations was in November. Actually, जो reading आया था, that was in November 10th, and that reading was lower than expectations, which was gladly liked by the markets, and that is why the markets went up, right? और अभी जो नेक्स्ट कैटलिस्ट होने वाला है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स का, दैट इज कमिंग ऑन December 13th एंड December 14th. नाउ टू जस्ट टू गिव यू गाइज सम मोर कलर, December 13th को हमारा नेक्स्ट सीपीआई और पीपीआई रीडिंग्स आने वाले हैं, राइट? और अगर नवंबर में जैसे मैंने बोला कि कम आया था, अगर दिसंबर में भी कम आता है, then that is gonna take the markets up, and that will be a strong catalyst for the Santa Claus rally going all the way till end of the year, right? And then 13th को ये numbers आएंगे, and 14th को Fed का rate hike decision है. Now, the global markets are expecting almost a 50 basis points rate hike, and I think that 50 basis points rate hike is pretty much priced in. And I think if we do get a CPI and a PPI rating which is lower than expectations, better than expectations, then हम लोग pretty much will be all set for a Santa Claus rally that will be continuing till end of this year. ठीक है, so that is my view on what is happening till end of December. इसमें बस एक ही कैवियट है कि अगर सीपीआई और पीपीआई रीडिंग जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा और रीडिंग्स अच्छे आएंगे, अगर वो बुरे आते हैं और अगर इस बार भी रीडिंग हाई आता है, देन फॉरगेट अबाउट इट. सांता क्लॉस रैली इज आउट ऑफ द विंडो एंड वी आर हेडेड डाउनवर्ड्स. एंड जो स्टॉक मार्केट का जो क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, दैट विल बी प्रेटी मच एंडेड on 13th of December, and then 14th को Federal Reserve Jerome Powell, they will have to walk a very tight rope कि भाई 50 basis points करना है कि 75 basis points rate hike करनी है. ठीक है, so what I'm saying will still hold ground if CPI and PPI come better than expectations. If it comes, the inflation reading is lower. If inflation is higher, then forget about it, and it'll be worse. It'll be the markets will be headed on the downside. Okay. So that's that. Now the other thing is what's gonna shape up for 2023, right?
सो जैसे मैंने बोला कि एज वी गेट इनटू 2023, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि नीरज, क्या इज द बॉटम ऑलरेडी इन, राइट? द बेयर मार्केट का जो बॉटम है, इज दैट ऑलरेडी इन? बहुत लोगों ने इन्वेस्टिंग का प्लान किया था, एंड दे ऑलवेज आस्क मी कि भाई, क्या हमारी अपॉर्चुनिटी छूट गई है? एंड इफ द अक्टूबर or the June low or the September low that we saw, was that the low of the low, and the markets are all only gonna go up from here? So my answer is no. I don't think कि ऐसा होने वाला है. I think कि जनवरी में, we especially Q1, first Q1 of 2023 and Q leading into Q2 2023, I think the markets will take another downturn, because guys, होता ये है कि when the Fed goes through these interest rate hikes, right? It takes a while for those interest rate hikes to reflect in the financial system, right? It takes months for those rate hikes to show up, right? Especially, and when the Fed raises interest rate, अभी in fact अगर आप US का डेटा देखेंगे तो unemployment is still not there. I mean, we are still almost at a 30-year low from an unemployment standpoint. Where for every person that is out there, there are almost two jobs available, right? So the job market in US is still very tight, and it is a very unique scenario because recession, especially when people, जब लोग रिसेशन का सोचते हैं, तो टिपिकली दैट इन्वॉल्व्स कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी, इंटरेस्ट रेट हाइक्स होंगे, इकोनॉमी स्लो डाउन होगा, सो ये सारी चीज़ होंगी. एंड स्टार्टिंग जनवरी, आई फील कि जब काफ़ी महीने बीत चुके होंगे, एंड देन द इकोनॉमी, the US economy will start seeing, slow down in economy, slow down in growth, slow down in spending, slow down in employment. Unemployment will increase. I think at that time, the global financial markets will take a leg for the downturn again. And typically, historically, अगर आप देखोगे तो यही होता है कि especially as you are in a recession, the markets will typically bottom during recession, right? Because markets are basically a discounted mechanism, right? It's a forward looking mechanism where markets basically price in 6 to 9 months ahead, down the road कि क्या होने वाला है, right? So especially in the beginning of 2023, I think markets will take another leg to the downturn. I think this downturn will continue, and I think we will definitely test the lows of 2021, 2022. Those lows will get tested, and I think that is where you guys should be buying a lot of stuff for your long-term investment. And so we will experience another bear market after the Santa Claus rally, and I think this will continue till Q2 2023, and I think that's when we will really make a bottom. And फिर वहाँ से, once we start seeing economy going back to normal, and then the market will start looking 6 to 9 months in the future, because we'll be done with all the rate hikes, and then markets will start looking into the future, into, like, into a more normal looking environment. And I think the later half, the second half of 2023, is when we will experience a rally again in global markets. As we get into 2024, we will start seeing global central banks like Fed, ECB, and RBI start cutting back their interest rate, right, which will further fuel the rally, right? So that's basically my outlook, guys, for the end of 2022, and how I see 2023, right? The first half, first 2 quarters of 2023 will see the market selling off, एंड देन द मार्केट्स जो हैं अपना बॉटम बना के स्टेबल होने की कोशिश करेंगे बाय मई और जून टाइम फ्रेम, एंड देन द मार्केट्स विल स्टार्ट लुकिंग इनटू द फ्यूचर, into more stable growth, more stable employment, and then you will see a stock market rally into the second half of 2023, and then 2024, 2025 will be pretty normal, 9 to 10%, stable growth from a US market standpoint. And again, like I say, like Indian markets pretty much simulate US markets on a very in a very close fashion, and I think that's basically what will happen even in an Indian market standpoint as well.
इसमें बस एक ही कैवियट है कि टिपिकली बिटवीन नाउ एंड December 13 थैंक्सगिविंग और December 13 के पहले टिपिकली between this period and the Santa Claus rally, there's typically some sort of downward action that is expected in the markets. So I do expect, और इंडिया में तो स्पेशली अभी गुजरात इलेक्शंस भी होने वाले हैं अगले हफ्ते. I think that will put some pressure on the markets. I think for the next 2 weeks we have to be a little cautious. Global markets as well as Indian markets, I think we are headed for a downward action. But I think December 13th, I don't think किसी को भी short positions carry करना चाहिए, especially till the end of the year. I think you should be long, and stocks as well as futures if you trade the indexes. And then by 2023 beginning, I think you should book your profits. Last week of December, early January, try to book your profits, see the price action, and then once you start seeing the market making a toppish behavior, I think that will be a good time to get into उस टाइम पे puts खरीदना या फिर stocks को short करना will be a better idea. And I think that will continue and the markets will test the lows of 2022 in the first 2 quarters of 2023. Okay, and that will be a good time to start investing for your long-term portfolio. ठीक है. Okay, guys. So I think that was my outlook, pretty much. I mean, again, मैं macroeconomics बहुत closely study करता हूँ और मेरा काफ़ी अच्छा grasp रहता है on how these global things are tied to each other, and this is what I feel will be happening, and we'll see if I'm right or what the global markets end up doing. But these views are entirely my personal, and let's see how things shape up. And all the best to everyone for your investing career. I'll talk to you guys very soon. Thank you very much. Bye.